ठीक है, अच्छा, ओके, एक बारी देखना अभी आया मैं। हेलो, हाँ देखिए। अच्छा, ओके, हेलो एवरीवन, just a minute, I guess there is, yeah, hello everyone, a very good evening. Sorry for there are some technical issues going on my system. It took around 7 minutes. Sorry, very sorry to all of you. Some of you might be waiting for the same. Yeah, hi Anurag, hi Ranveer, hello everyone, very good evening. Let's just wait a couple of minutes to join more folks, then we'll start our today's session. Hello everyone. Yeah, hi Anurag. Okay, I'm properly audible, huh? Everyone. Is there anyone who's facing the issue with this stream? Because I was facing a lot while joining this. Okay. Just quickly, guys. There are, I guess, how many folks are? Yeah. Hi, Ranveer. Can you guys just put your experience on the chat section so that I can get more info about my audience and I can tailor my this session to that uh, direction. Anurag, Ranveer, can you guys just ping your experience on the chat section? Then we'll move forward and we'll discuss a couple of strategies and how to tailor your resume according to your company, your desired company, so that your resume gets shortlisted there, and that should be ATS friendly as well. And how my resume got selected in multiple tech giants. Huh? I'm waiting for you all. Hello everyone. Good. Okay. What's your experience, Anurag? Okay, great, Ranveer. Great, Poonam. Okay, great. So let me just start the session. Before starting the session, let me tell you about the job scenario in the current market. So right now, 2.5 years of experience with Dart, great. So I'm getting like most of you are less than 3 years of experience are boils down to the SD1 position or maybe SD2 as well in some of the good progress companies. Okay, is there anyone who has more than 6 years of experience or 7 years of experience in this stream? Is there anyone? Okay, fine. So many of you will maybe lie on SD1 position or SD2 position. So in the current market scenario, what is happening? Okay, some of you may be thinking कि अभी current market में इतना चल नहीं रहा है, इतनी jobs नहीं है. जो दे रहे होंगे ऑलरेडी उनको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि इतनी जॉब्स हैं, कैसे इंटरव्यूज हो रहे होंगे. And let me tell you about myself. I have experienced more than 7 years of experience in majorly in backend. Currently, I am working in Make My Trip as a lead engineer in the hotels team. And previously, I have worked more than 3 years in OLX. And prior to that, I worked in couple of organizations as well. So Make My Trip में मैंने अभी recently switch किया है around 6 months back, I guess. Yeah. So उस time पे I gave interview with the multiple companies in the Bangalore as well, Hyderabad as well, in Gurgaon as well, and I choose to go with the Make My Trip because of majorly because of the location constraint, because Make My Trip is giving the offer in the Gurgaon location. Okay, but I have given many interviews for many companies as well. So और उस टाइम पे आई गेस थोड़ा सा मार्केट में स्लो डाउन था हायरिंग, अभी बढ़ी है उससे तो. और उस टाइम भी मुझे काफी कॉल्स मिली थी जो कि मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेटजी, बिकॉज ऑफ रेज्यूमे, माय रेज्यूमे वाज एटीएस फ्रेंडली एज वेल. ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं. करंट मार्केट में अभी डिसेंट जॉब आ गई हैं
और कुछ नई जॉब्स आ भी रही हैं मार्केट में, ठीक है। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा कि जैसा पहले कोविड के टाइम में अगर आप लोगों में से किसी ने स्विच किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको इजीली बहुत ज्यादा कॉल मिल जाती थी, आपके एक एक दिन में दो दो इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते थे, ठीक है। और इंटरव्यूज का लेवल उतना नहीं होता था, थोड़ा बहुत भी 70-80% भी सही होगा तो निकल जाता था और आपको मल्टीपल ऑफर्स मिल जाते थे, बिकॉज उस समय थोड़ा सा मार्केट में क्रंच था। अभी ऐसा क्या है कि अभी इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी करनी पड़ेगी। आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट आपको कॉल आए, उसके लिए आपके रेज्यूमे को भी आपको बेहतर तरीके से टेलर मेड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग सम ऑफ लाइक कुछ कंपनीज में आपको स्पेसिफिकली उन कंपनीज के हिसाब से अपना रेज्यूमे भी बनाना पड़ेगा। और आपको मशीन कोडिंग राउंड में फोर्थ ईयर इन द स्टूडेंट, ग्रेट ग्रेट, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा मशीन कोडिंग राउंड में ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज अभी लास्ट 1 year से मशीन कोडिंग राउंड कुछ ज्यादा चलन में आ गया, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। और उसका इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने अपने रेज्यूमे में कितना चमकाया हुआ है, इससे पहले आपने कितना अच्छा काम किया हुआ है। दैट इज गुड पॉइंट, जो कि आपका अच्छा पॉइंट है, बट सबसे पहले आपका एक मशीन कोडिंग राउंड भी हो जाता है अच्छी कंपनीज में, जहां पर रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, दैट इज काइंड ऑफ बार रेजर और बार रेजर काइंड ऑफ राउंड, जहां पर रिजेक्शन मोड में रहता है आपका, ठीक है। तो हमारे सेशन के एजेंडा के हिसाब से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, ठीक है। रेज्यूमे आपका, हाय मानस, आई गेस मानस सर इज आल्सो हियर। हेलो मानस, आई एम ऑडिबल? Let me just, hi Manas, I'm audible? You are in mute. uh, you are on mute. Okay, just figure out like how you can unmute yourself in the stream. Let me just continue with the session. ठीक है, तो I was saying about your resume. तो आपके रेज्यूमे में जो मेन चीज है उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको ऐसा करना है कि यार सबसे पहले तो आपके रेज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो आपने अलग से मेंशन किए गए हो, जो कि कंपनी स्पेसिफिक, तो आप पर्सनल आप कर ही रहे हो, पर्सनल जो भी अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसको गिटहब की रेपो में डालो, गिटहब के लिंक को अपने रेज्यूमे में चिपकाओ, ठीक है। अपनी जो प्रोफाइल्स है, लीड कोड का लिंक है, लीड कोड में बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि यार मल्टीपल प्लेटफॉर्म में मल्टीपल क्वेश्चन कर लेते हैं, 40-40, 50-50 कर लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बट किसी एक प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट होकर उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए होते, ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट होता है। आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, चाहे वो लेट कोड हो चाहे कोड फोर्सेस किसी में हो, उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, मे बी 300, 400, 500 का काउंट, जो कि आप रेज्यूमे में डालो तो कोई अगर खोल के देखे तो वो समझ पाएगी हाँ आपकी प्रैक्टिस है, आपने इतने क्वेश्चन किए हुए। फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बोल रहा हूँ, गूगल के इंटरव्यू देने जाओगे वो आपके रिसेंट के सबमिशन ही देखते हैं, आपने पिछले 6 महीने में कितने सबमिशन किए हुए, ठीक है। उसके बेस पे वो कॉल लेते हैं कि आपको इंटरव्यू में बैठाना चाहिए नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी एक कोई प्रोफाइल पकड़नी है, चाहे लीड कोड पकड़ लो, सेपर साइड में कहूंगा लीड कोड पकड़ लो, उसमें काउंट बढ़ा लो, ठीक है। दूसरा आपका क्या पॉइंट है, रेज्यूमे में अपने जो प्रोजेक्ट डाल रहे हो उनके बारे में मास्टरी कर लो, ठीक है, कि भाई ये प्रोजेक्ट से अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो आप मतलब फाड़ दोगे उसमें, कोई भी कुछ पूछ ले उठा के, ठीक है। तीसरी चीज, अपने रेज्यूमे को रिजल्ट ओरिएंटेड लिखो। 3 चीजों को मैं बोलता हूं जो कि मैं भी फॉलो करता हूं, ठीक है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट कंपनी हैज अचीव्ड फ्रॉम योर इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक एग्जांपल बोलता हूं कि आपको कोई टास्क दिया गया था और आपने उसको उठाया और उससे आपने लेटेंसी को 1/20 लेटेंसी को ऐसा बोलता हूँ, लेटेंसी को आपने 50% से बढ़ा दिया, मतलब अच्छा कर दिया उसको, और आपने कोई एक ऐसा टास्क किया जिसने इंफ्रा कॉस्ट को 1/4 कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हाईलाइट करने अपने रिज्यूमे में, ठीक है, कि आपने क्या प्रॉब्लम थी, क्या इनपुट दिया, उससे कंपनी को क्या अचीव हुआ। Maybe you can put as a number of 1/4 of infra cost, or maybe you can put as a cost as well, कि that is saving that x dollar of amount in year for the company, ठीक है, you have contributed। तो ये क्या चीज होते हैं, ये हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जो कि रिक्रूटर हो चाहे इंटरव्यूअर हो उसको तुरंत स्ट्राइक करते हैं। तो वो इतनी बड़ी थ्योरी कोई नहीं पढ़ना चाहता। आप रेज्यूमे में अपने जितने भी प्रोजेक्ट को वो एक्सप्लेन करोगे, लाइन बाय लाइन 4 लाइन लिखोगे, नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ भाई। आप सिंपल अगर 2 लाइन लिखी है, आधी लाइन में लिखा है कि यार आई हैव लाइक दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट,
I did these things and I have achieved this thing. That's it. अगर ऐसे आपने 4-5 रिजल्ट लिख दिए, दैट इज सफिशिएंट यार. अगर आप एक कंपनी में काम कर लिए, कंपनी में काम कर रहे हो, आपने 4-5 चीजें लिख दी, सफिशिएंट है. जैसा कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर 3 से 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस का कोई बंदा नहीं है. आपका रेज्यूमे एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. स्ट्रेट मतलब हैंड्स डाउन एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपने बहुत ही कुछ ना करा हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस वर्क एक्चुअली. ठीक है, उसको आप मेंशन कर सकते हो सेकंड पेज में, बट आपका सिंपल और एक पेज का रेज्यूमे होना चाहिए. बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा आई कैची होना चाहिए, और उसमें आपने बिल्कुल टू बी प्रिसाइज जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं वो मेंशन करी जरूर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा आपकी 2 लाइन 3 लाइन पढ़ रहा है और उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला. ठीक है, अगर मैं रेज्यूमे पढ़ना स्टार्ट करता हूं, जब भी आप भी अपना रेज्यूमे पढ़ रहे हो, तो आपको ये होना चाहिए कि यार आप 2-3 लाइन पढ़ने के बाद, किसी का रेज्यूमे पढ़ो, 2-3 लाइन पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि इसके रेज्यूमे को आगे पढ़ना है. ऐसा ना लगे कि यार 2-3 आपने मतलब वही चैट जीपीटी से उठा के थोड़ी बहुत लाइनें चिपका दी और 2-3 लाइन पढ़ने के बाद इंटरेस्ट लूज हो रहा है. रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट बढ़ रहा है. तो वो कैसे होगा? वो होगा आपकी जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आप लिखोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी लिखोगे, उससे होगा. और अपनी अचीवमेंट्स को लिखोगे. ठीक है, अचीवमेंट्स भी मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपनी कॉलेज की, अपने स्कूल्स के अचीवमेंट्स को लिख सकते हो. बट दिस इज नॉट एक्सपेक्ट लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि यार मोर देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप अपने कॉलेज या स्कूल के अचीवमेंट लिख रहे हो. ठीक है, वो नहीं, रिसेंट के अचीवमेंट्स. एंड द लास्ट थिंग इज कि जब आपका लास्ट राउंड होता है, जब फॉर एग्जांपल आपका मैनेजरल राउंड हो रहा होता है, ठीक है, उस समय आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, एक क्वेश्चन होता है जो आपको वेल प्रिपेयर्ड रखना है कि लास्ट 6 मंथ में आपने ऐसा क्या अच्छा किया या फिर ऐसा क्या चैलेंजिंग किया है. ठीक है, हो सकता है आपने किया हो सकता है आपने ना किया हो. ठीक है, इट डजंट मैटर. आपकी कंपनी में या फिर किसी ने भी आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो लोगों से. हो सकता है किसी और ने की हो, और उससे डिस्कस करके आप समझो कि उसने कैसे की, क्या करी. ऐसी 1-2 प्रॉब्लम को मतलब समझ के रखो जो कि आप बता सको. ठीक है, तो ये हो गया रेज्यूमे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. मे बी आई गेस अब मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ बच्चों के, और मैं आई गेस मानस सर इज ऑल्सो देयर. हाय मानस, आई एम ऑडिबल? I guess there is some issue with your mic. I don't know why. I'm audible to you. I'm audible to everyone. Hi, Archit. Okay, so I guess the resume thing I have covered. What things we need to make sure while can you share any? Yeah, okay, let me share one link. I guess I have one link that I can share. You guys can go through this link as well. This one, this is the sample link. Let me know if you guys are able to access this link. You can go through this link, like how precisely this sample resume has mentioned the education, the coursework, the projects, and the experience things. Can you tell me how to calculate GPA as per the university or just the overall sense? This is very little thing, I guess. Metaverse, the code word. You can like for the GPA, whatever the your company is providing, you can mention on the same resume. Sir, please share the interview experience. Because of time constraint, if like after the question, I'll share about my experience as well. Hi, Manas. No, I guess you're not audible. I don't know what issue at my end. Maybe. Hello everyone. Is Manas is audible to everyone, or is it me? Is it with me only? Just a quick question to everyone on the live stream. Should I put the fake numbers like enhancing the system reliability of 25%? I would not suggest you should fake it. You can fake it till some extent, not very much. Like if you have achieved like till 25%, you can tell them like 40%. Yeah, you can do it, but you should be make sure like you can justify that number as well in the interview section. Manas sir, you are not audible. Yeah, Manas, I guess you are not audible. You can check on the settings section as well if this thing is working for you or not. And one more thing, Manas, there is a one section on your like live add to stage. You can basically click on add to stage on your this screen.
whatever the screen, the small screen is visible to you in your system. Just a minute. I guess Manas is calling me. Just a minute. Hi, Man. Okay, fine. Let me unmute. Let me edit mic section. Uh, ठीक है. I have given the mic. I have given the rights to you as well. Like there is a already mentioned edit mic setting, so I have given all those mic setting to you. Okay, let me just quickly take questions as well. Yeah, Prakhar, you can do these things at some extent, not very much. Like if you have achieved 10%, you can do by 20% or the 25%. Okay, but not more than that, because you have to justify that as well. Can I write 2 3 extra projects other than the company projects? You can write, Anurag, but make sure like if your one page is not aligned to put these projects, you can mention like I have completed multiple projects. You guys, like, anyone can go on that GitHub link and check your personal projects as well. Okay, I have none my 9 months career gap. That two in support. Kindly suggest how can get in the SD role. SR adventure. Okay, I guess I know, like, I know many folks who have a career gap around 1 year as well, and they got decent hike and decent job as well in the industry. One of my friend, like one of Mana's friend, I got to know like he left his job 7 months back, and he stayed like hand stayed six months. He prepared like well, and recently he cracked DoorDash and Intuit as well with the very decent package. So you can also do, but you should be very persistent and also like consistent for the preparation as well. Huh? I have 3 years of experience, Lipika, as a developer. Should I mention coding blocks? That I Yeah, you have experience, 3 years of experience. You can mention in the resume as well. You have completed. Okay, that can be extra edge for the resume as well. Manas, you can try like for try my. No, you're not audible, I guess. Sir, how can justify the gap after a gap? I've done the coding blocks and now looking for the job. You can justify. Yeah, this is very tough. Ayush, tough, but you can justify, like you can like tell like there is some personal problem or maybe some of health issues. By giving these excuses, you can justify your career gap. Like there is a major health issues with you, and that is why you need like maybe. That kind of thing that can work, like the health issue is the major one you can mention. In this column type information in the resume is good instead of paragraph, because majority of people use paragraph, or you can say line to line information in resume. um, yeah, so I'll not suggest to put the whole, like your paragraph should be more than 3 to 4 lines, because no one is going to read all those information on those paragraph. Maybe if your line is exceeding, like you are explaining your projects and it is going beyond 3 to 4 line, you can highlight those particular words, like the latency word, caching word, infra cost word, the challenging work. That things you can mention on highlight on a resume. Yeah? How to choose the perfect project? There is no definition of the perfect project. You can do any projects, but and that project is perfect, not specific the requirement. The requirement can be anything. The perfect in terms of how you build it. Huh? No one is getting the problem like doing the rocket science. Everyone is getting the different problem, but how you are catering, how you are solving this problem, how you're mentioning these things on your resume, that really matters the most. Is it necessary to include self photo? No, it is not necessary to include your self photo into the resume. But yeah, if you are a fresher, you can do this. Okay, but it is not necessary to like put yourself.
I am in the third year preparing for the summer internship. Any suggestion? Prepare for the intern summership. I'll suggest like go for you are in the college. Primary thing I'll suggest you, you should keep practice on the DSA part. And the secondary thing, you are in you are in your third year, and you can basically figure out in which domain you should tilt yourself, either in the front end, back end, ML, okay, DevOps, in any direction, and you should need to you need to work on those particular area. But the DSA thing is mandatory. Can you provide? Yeah, sure. I'll provide, Ankit, I'll provide. Okay, I am in the fourth year, a student from the tier 3 college. Please give some tips to get placed. I have knowledge in front end. Okay. What's your question? Dil se Dhamal TV. Lipika Nava, I resigned from my job 2 months ago because of the toxic work culture. That is a great thing you did, and focused on the DSA course. And how do I dodge question regarding this? Like why I could not, why you could not, why could not you multitask on job and course? I didn't get you. Okay, so you can mention on like maybe you can, because there is a very tricky the culture was toxic, and you need to explain in the where you are giving the interview, you need to explain the HR as well. So might be you can explain there are some incident, that is why I resigned from there. And like if you have experience more than 3 years, like less than 3 years of 2 years, you should focus on the DSA part, like larger extent rather than the high level design. Okay. Any suggestions on the tech stack? If you are in the backend, then you can go for Java and the Golang as well. Okay. And if you are front end, you can like go for the React as well. How do you approach how do you approach the first company? I'm in the fourth year student, tier 3 college. Please give some tips to get placed. I have a knowledge of front end. So it doesn't matter. I'm also from tier 3 college. Okay, you are in the fourth year student, so I'll suggest keep practice. Like there are a lot of resources on the YouTube as well, and you can find on the internet. So keep practice on the DSA part. Like go for the good projects as well. अच्छे projects बनाओ. और मेरे हिसाब से जो फोर्थ ईयर में है उनको मेंटरशिप की काफी नीड होती है, तो अच्छे मेंटर्स को ढूंढो. मे बी यू हैव टू पे फॉर लाइक कपल ऑफ लाइक यू हैव टू पे 500 और 1000 अमाउंट, बट गो फॉर इट. अच्छा मेंटर मिल जाएगा तो दे कैन गाइड यू. ठीक है, जिससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी ना. रियली रिसीव अ मेल रिप्लाइज कंपनी, सो हाउ टू अप्रोच इट. देखो यार ये चीज बहुत मतलब मैं टफ तो नहीं कहूंगा, बट ये ना डिफरेंट तरीका होता है कहने का, अप्रोच करने का. अपने नेटवर्क को थोड़ा ब्रॉड करो. अगर आप अभी कॉलेज में हो तो अभी से करना शुरू करो. लिंक्डइन पे लोगों को से कनेक्ट करो. ठीक है, जितनी भी कंपनीज के लोगों हैं उनसे अपने कनेक्शंस को बढ़ाओ और कोल्ड मेल्स करना शुरू करो. कोल्ड मेल लिखने की आदत डालो अभी, चाहे कोल्ड मेल हो चाहे कोल्ड मैसेजेस हो, चाहे लिंक्डइन एज वेल. 100 लोगों को करोगे, 4 लोग रिप्लाई करेंगे, एक ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, एक कन्वर्ट हो रहा ना, तो ठीक है, यही बहुत है. तो अपना नेटवर्क को बढ़ाओ. नेटवर्क को बढ़ाओगे, आप 100 में से 5 लोग कन्वर्ट होंगे, ऐसे 5-25 बनेंगे, बहुत है. ठीक है, उतने लोगों से आपका नेटवर्क बन जाएगा और सभी लोग अच्छे बंदों को रिफर करना चाहते हैं. बट आप स्पैम मत करो. मतलब मैं कहूंगा अगर आपको मेरे से रेफरल लेना है, मेक माय ट्रिप में कहीं पे भी रेफरल लेना है, ठीक है, मेरे फ्रेंड से, आप डिसेंटली अगर अपना रेज्यूमे भेजोगे और अपना मतलब ऐसे नहीं कि यार आपने हाई लिख के छोड़ दिया या लिख के छोड़ दिया कि बस यार कि मतलब मेरे को इसमें रेफरल चाहिए, बस यार इग्नोर कर देंगे. आप अपना लिखो कि भाई ये आपका रेज्यूमे है, ठीक है, आपने इतना काम कर चुके हो और मे बी मेक माई ट्रिप या फिर कहीं पे भी ये जॉब ओपनिंग है, तो अगर आपका कोई रेफरल हो तो आप मुझे रेफर कर दो. और अपनी अचीवमेंट्स को लिखो कि आप 2 महीने से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने ये प्रोजेक्ट किए हैं और आप कंसिस्टेंट हो इंटरव्यू से, तो मेरे को भी लगेगा यार बंदा सीरियस है, इसको रेफर करते हैं और इसको थोड़ा गाइड करते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ देम रिक्रूटेड डायरेक्टली अप्लाई द फॉर द कंपनी रिक्रूटमेंट. नहीं ऐसा नहीं है. ऑल ऑफ द रिक्रूटेड डायरेक्टली अप्लाई फॉर द कंपनी, मतलब मैं कहूंगा कि रेफरल को ज्यादा एडवांटेज मिलता है. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं लोग अप्लाई करते हैं, नहीं मिलता, बट रेफरल को ज्यादा. तभी मैं कह रहा हूँ कि अपना लिंक्डइन में या फिर कनेक्शन बढ़ाओगे, आपको रेफरल मिलेंगे. लेकिन लिंक्डइन पे जब आप मैसेजेस करते हो, बहुत मैटर करता है अपना पहला मैसेज क्या ड्राफ्ट कर रहे हो, उस पर थोड़ा रिसर्च करके ही करो.
जो पहला मैसेज आप ड्राफ्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले मैसेज में आपको अपने आप को सेल कर रहे हो, चाहे अपना रेज्यूमे हो, चाहे अपना वर्क हो, चाहे जो भी हो, उस पर मेहनत करो, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव कनेक्शन और लिंक्डइन एंड होम टू कनेक्ट, ठीक है यार। आप अपने डोमेन के बंदों को ढूंढो। आप बैकएंड पे जाना चाहते हो, बैकएंड में अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो, तो बैकएंड के लोगों का नेटवर्क बनाओ, बैकएंड के लोगों से कनेक्ट करो, उनको मेल लिखो, रिप्लाईज करो, कनेक्ट करो, म्यूचुअल कनेक्शन से कनेक्ट करो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। आई गेस most of the questions I have covered. One last question, anyone? One last question. I can give my personal email ID as well, so that you guys can ping me, mail me there, and also I can put. Yeah, I can also put my LinkedIn profile, so you guys also can reach directly to me on the LinkedIn. ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। और रिज्यूमे से लेकर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, या फिर मतलब अगर आपने अच्छा काम किया है, अभी जॉब सर्च कर रहे हो, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, मैं वहां पर रेफर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है गाइस, you have 8 years of experience, Anurag. Anurag, if you have 8 years of experience, then I'll say ki, you need to, like, you have to work hard, and also you required a lot of like you required a lot of good mentorship as well, क्योंकि 8 years का गैप में जस्टिफाई करना थोड़ा ज्यादा ही टफ हो जाता है, तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रेश, लाइक अच्छा अच्छा 8 years no gap, 8 years of, I have 8 years of gap, you have mentioned like I have 8 years of gap. ठीक है guys, time is up. I guess you can also ping me on the LinkedIn. I'll connect there, huh? And one more thing, like the coding blogs is also starting their boot camp from 15th of September. For more information, you can go on this link. I'll just paste it out. Career boot camp, and raise the help query or mention on the Google form to get more information. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye bye. Have a good night.